Good morning everyone. How are you doing all? Today is day 5 and our last day with Dubai. We are heading toward Jumeirah beach. कुछ बीच का भी मजा लिया जाए. आपको भी अपडेट रखूंगी. Let's have some fun at Jumeirah. See you guys. गाइस बीच पे बहुत मजा आया. थोड़ा सॉल्टी वाटर था बट वेव बहुत ही मजेदार थी. अब मैं जा रही हूँ लंच करने. उसके बाद एक नई स्पॉट पे मिलती हूँ और फिर आज के दिन से अलविदा लेंगे शाम को. सी यू गाइस. I'm going back to my room now. Going to take some rest. मिलते हैं आपके साथ. सो गाइस हमने बस टिकट सुबह मॉर्निंग में यहाँ के लिया था और बस टिकट का मैंने आपको दिखाया. उसमें एक टिकट है जिससे जो इशू होता है और उसके बाद अभी बॉर्डर पे आकर एक एग्जिट स्लिप इशू हुई है जिस विच कॉस्टेड मी लाइक 35 दिरहम्स और उससे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगी है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम दुबई एंड एंटरिंग द बॉर्डर ऑफ मस्कत. So this is new for me as well of paying the new exit fee for passing this border. Well, while coming from Dubai, from Muscat to Dubai, I did not face anything, so I paid a 35 dirham and now heading towards Muscat. See you guys. सो गाइस हम मस्कट में एंटर कर गए हैं और 2 जगह चेकिंग हुई थी हम लोग की. यूएई टू ओमान में एंट्री करते हुए 2 जगह हमारे लगेज चेक हुए. हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा एग्जिट फ्रॉम यूएई एंड एंट्री इनटू ओमान विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके लिए मैंने आपको बताया कि 35 दिरहम पे करने पड़े. सो ये एक
बहुत अच्छी चीज़ है for every passenger safety and taking an entry exit awareness of every passenger in the GCC country. So this is really nice for all everyone traveling with Al Khanjari. It's a smooth journey, well organized, and with a reasonable amount of money which they are charging, that is 10 riyals in Omani riyals, and 35 dirhams plus 100 dirhams, that is around 135 dirhams. The total journey costed me traveling from Dubai to Muscat. I'll be getting down at my station that is near to my home location, and then after the day, the vacation is over, back to routines, and from tomorrow I'll start my work. Stay oriented, stay and do like, subscribe, press the bell icon, keep spreading your love, guys. See you soon with another vlog, another beginning, another day. See you soon. Ma salama for now.